We are going through liquidity analysis of financial statements of business organizations. We have talked about what liquidity is and what are the basic ratios to check the position of liquidity. We talked about the current ratio, the quick ratio, and the cash ratio. We are continuing our discussion of liquidity and we'll see some other measures which are important to see the liquidity position. The first one is gross working capital. Working capital is called uh, the capital which actually is required to operate and run a business organization. It is considered as the blood in a body, that without the circulation of blood, a body cannot be alive. Similarly, without working capital, a business organization cannot operate. So, that is the importance of working capital and the current assets. So, the total value of all the current assets is called gross working capital. देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कुछ शामिल होता है. ऑल करंट एसेट्स, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास दो तरह की इन्वेंट्री या स्टॉक्स हैं. एक वो जिसे हम स्टॉक इन ट्रेड कहते हैं. स्टॉक इन ट्रेड वो स्टॉक, वो इन्वेंट्री जो हमारे पास बेचने के लिए मौजूद है. यानी अगर एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोडक्ट को खरीदती और उसी तरह बेच देती है, तो वही उसका स्टॉक इन ट्रेड होगा. लेकिन अगर एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो रॉ मटेरियल खरीदती है, फिर उसे कन्वर्ट करती है इन अ फिनिश्ड प्रोडक्ट और फिनिश्ड प्रोडक्ट को सेल करती है, देन आर स्टॉक इन ट्रेड विल कंप्राइज ऑफ रॉ मटेरियल, द वर्क इन प्रोसेस, यानी वो गुड्स जिन पर अभी काम जारी है और वो मुकम्मल नहीं हुए, उसकी इन्वेंट्री भी स्टॉक इन ट्रेड में आएगी. एंड फाइनली द कंप्लीटेड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स. इसी तरह हमारे पास एक और इन्वेंट्री या स्टॉक होता है जिसे हम स्टोर्स एंड स्पेयर्स कहते हैं. ये वो इन्वेंट्री या स्टॉक है जो रीसेल के लिए नहीं है बल्कि इंटरनल कंजम्पशन के लिए है. ये भी हमारे करंट एसेट्स का हिस्सा होता है. देन वी हैव ट्रेड डेट्स और डेटर्स और अकाउंट्स रिसीवेबल्स, यानी वो लोग जिन्हें हमने क्रेडिट सेल की है, उधार सेल की है, और उनसे अभी हमने ये पैसा वसूल करना है. सो दे आर आर करंट एसेट्स. इसी तरह द एडवांसेस दैट वी हैव मेड, द प्री पेमेंट्स दैट वी हैव मेड, and because of some other reasons other than credit sales, if we have to receive something from others, we call them other receivables, which are collectively a part of our current assets. Then we have cash and cash equivalents, and all these collectively are known as our current assets, and that is our gross working capital. Then we have our net working capital, and net working capital is the difference of our current assets and our current liabilities. It has to be positive. It has to be a figure that means the current assets should be more than the current liabilities for a business to be functioning smoothly. So, suppose if we have got 40,000 rupees worth current assets and 28,000 rupees worth current liabilities, so we'll have net working capital of 12,000. जितना नेट वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगा उतनी अच्छी लिक्विडिटी समझी जाएगी. देन वी हैव कैश कन्वर्जन साइकिल, यानी कितने अरसे में हमारे एसेट्स कैश में कन्वर्ट होते हैं और कैश हमें मिलता है. यानी कैश कन्वर्जन साइकिल के दो एस्पेक्ट्स हैं. एक तरफ वो दो एसेट्स हैं कि जहाँ पर हमारा कैश इन्वॉल्व होता है. So that is our cash is blocked in account receivables and also in inventories. जब हम इन्वेंट्री खरीदते हैं तो हम कैश पे करते हैं और इन्वेंट्री हमारे पास रहती है तो हमारा कैश ब्लॉक हो जाता है. जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो लोगों से हमें पैसा लेना है लेकिन वो 30, 40, 50 दिन पैसा नहीं मिलता तो हमारा कैश ब्लॉक हो जाता है. इसके बरक्स when we look at the other side of it, where we've got accounts payable or creditors, ये वो लोग हैं जो हमें क्रेडिट के ऊपर चीज़ें बेचते हैं. यानी वी रिसीव द गुड्स एंड सर्विसेज बट वी डू नॉट पे.
तो यहाँ पर हमें कैश ना पे करके एक तरह का लिवरेज या एडवांटेज हासिल होता है. सो टू कैलकुलेट द कैश कन्वर्जन साइकिल वी कंसिडर बोथ पार्ट्स ऑफ इट. दैट इज वेयर आर कैश इज ब्लॉक्ड एंड द अदर पार्ट where we are using or blocking the cash of some other party. और इसका नेट बैलेंस हम कैलकुलेट करते हैं. यानी we make use of what is called receivables turnover in days. कितने दिन के लिए हमारे अकाउंट रिसीवेबल में हमारा कैश ब्लॉक होता है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. इसी तरह इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज इज ITD. कितने अरसे के लिए हमारा कैश इन्वेंट्री में ब्लॉक होता है. वी एड अप दीज टू अमाउंट्स सो दैट we get that for how many days the total amount of cash is blocked, and then we subtract the payables turnover in days. यानी कितने अरसे बाद हम अपने अकाउंट्स पेएबल को पेमेंट करते हैं. सो ये एडवांटेज है जिसको हम अपने रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री के सम में से माइनस करते हैं. सो इट्स रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज प्लस इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज दैट गिव्स अस the total number of days for which the cash is blocked minus the payables turnover, यानी कितने दिन के लिए हम किसी दूसरे का कैश ब्लॉक कर रहे हैं, और उसका नेट इफेक्ट जो हमारे पास आता है वो कैश कन्वर्जन साइकिल है. The number of days in which economic activities converted to cash may be termed as the cash conversion cycle. For example, if our receivable turnover in days is 55 and our inventory turnover in days is 60, so that means 115 days is the time period for which our funds will be blocked. And if the payables turnover in days is 45, so we subtract this and our cash conversion cycle comes out to be 70 days. यानी 70 डेज के लिए हमारा पैसा बिजनेस ऑपरेशंस में ब्लॉक हो रहा है. जितना ये कैश कन्वर्जन साइकिल कम होगा उतनी ही लिक्विडिटी अच्छी होगी, उतनी ही बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी समझी जाएगी. एंड देन फाइनली वी हैव द ट्रेड साइकिल. ट्रेड साइकिल असल में कैश कन्वर्जन साइकिल का ही एक कंपोनेंट या उसका एक हिस्सा है. In cash conversion cycle, we have inventory turnover and receivable turnovers, जिसमें से हम payables turnover को माइनस कर देते हैं. लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ वही पोर्शन लें, यानी if we just take the sum of inventory turnover and receivable turnovers, then what we will get is the operating cycle or the trade cycle. यानी ट्रेड और ऑपरेशंस की वजह से हमारा कितने दिन के लिए पैसा ब्लॉक होता है. सो इन सिंपल वर्ड्स, टू कैलकुलेट ट्रेड साइकिल वी नीड टू ऐड द रिसीवेबल टर्नओवर कैलकुलेटेड इन डेज एंड द इन्वेंट्री टर्नओवर कैलकुलेटेड इन डेज. ये दोनों वो मेजर्स हैं जिनको हम आगे चल के जब हम टर्नओवर रेशियोज पढ़ेंगे तो तफसील से पढ़ेंगे कि इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इनका क्या मतलब और क्या सिग्निफिकेंस है. लेकिन यहाँ पर इस वक्त ट्रेड साइकिल को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इन दोनों मेजर्स को एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं. यानी ट्रेड साइकिल इज सिंपली द सम ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज एंड रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज. सो वी मे से दैट द नंबर ऑफ डेज फॉर विच कैश इज ब्लॉक्ड इन द ट्रेड साइकिल is operating or trade cycle. For example, if our receivable turnover is 55 days and our inventory turnover is 60 days, then our total trade cycle or operating cycle will be of 115 days. Again, it is worth mentioning here is that we would like to keep this ऑपरेटिंग और ट्रेड साइकिल टू मिनिमम. ये जितना छोटा होगा, ये जितना कम होगा, उतनी ही लिक्विडिटी बेहतर होगी, उतनी ही कैश फ्लोज बेहतर होंगी. यानी ये ट्रेड साइकिल जितना छोटा है, इसका मतलब ये है कि उतनी ही जल्दी हमें अपना पैसा वापस मिल जाता है. एंड यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन वी रिसीव आवर कैश बैक?
हम उसे री इन्वेस्ट करते हैं, उसी बिजनेस में हम मज़ीद इन्वेंट्री खरीदते हैं और मज़ीद सेल्स जनरेट करते हैं। यानी जितना ट्रेड साइकिल छोटा होगा उतना ही हमें अपना कैश जल्द वापस मिलेगा और उससे हम मज़ीद सेल्स और इन्वेंट्री जनरेट कर सकेंगे। एंड इन दिस वे वी विल बी एबल टू इम्प्रूव आवर प्रॉफिटेबिलिटी। यानी ये ट्रेड साइकिल ही है जो एक दफ़ा मुकम्मल होता है तो हमें कुछ कैश और कुछ प्रॉफिट दे के जाता है। अगर एक साल में ये ट्रेड साइकिल जितनी ज़्यादा दफ़ा मुकम्मल होगा उतनी ही ज़्यादा मर्तबा हम अपने उस फंड्स, उस फाइनेंसिंग, उस पैसे के ऊपर प्रॉफिट कमा सकेंगे। सो द कंक्लूजन इज दैट वी वुड लाइक टू हैव अ क्विक कैश conversion cycle, and we would also like to have a quick operating or trade cycle.